Hello students, today we are going to do question number 1 of exercise 9.4, chapter 9, data handling, class 6 maths. A survey of 120 school students was done to find out which activity they prefer to do in their free time. Preferred activity: playing, 45 students; reading storybooks, 30 students; watching television, 20 students; listening to music, 10 students; and painting, 15 students. Now, draw a bar graph to illustrate the above data, taking scale of 1 unit length equals to 5 students. This is the scale. हमें जो scale given है 1 unit length equals to 5 students. And which activity is preferred by most of the students other than playing? और प्लेइंग के अलावा सबसे ज़्यादा क्या उसके सेकंड बात कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? रीडिंग स्टोरी बुक्स, 30 स्टूडेंट्स हैं. सो हम लिख देते हैं इसका आंसर तो रीडिंग स्टोरी बुक्स. नाउ अब हम इसका बार ग्राफ बनाना है. सो लेट्स मेक बार ग्राफ. सो बार ग्राफ इज रेडी विथ अस. ये हमारा बार ग्राफ और इसको अब बना लेते हैं हम. सो फर्स्ट विल ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो कुछ एक्सिस हम बना लेते हैं. सो हियर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लीव वन गैप like this, and here also one gap. So this is also one gap. Now we'll write y-axis पे हम scales लेंगे सारी. So 1 unit length, this is 1 unit length. ये 10 small units से, छोटे छोटे 10 smaller units से. So this is 5. 1 unit length 5 students से, तो 5. Then second, this is 10. Then comes 15. Then comes 20. Then comes 25, then comes 30, then 40, 35, then 40, and the last one is 45 because the total number of students are 45. Highest is playing one, 45. Now first one, if you see now table, first one is playing 45 students. So we have to make the bar graph of 45 students. So let's draw bar graph 45 students. So first one, leave one gap, and we are going to draw 45 now. So this is line of 45. 45 तक जाना है हमें, उस बार ग्राफ को ले जाना है 45 तक. So this is 45. You can check. This is 45. Up to 45 we have drawn, and we have to write playing. This is playing. First one is playing. So we'll write here playing. This is playing. This one is playing. Second one is reading storybooks. So again we are going to leave one gap now, and storybooks is 30. So 30. Where is 30? Here it is 30. So we'll make one more bar and leave one gap, and up to 30 we have to make. So yeah, this is up to 30 we have made, and this is what? Reading storybooks. This is reading storybooks. So right, this is of reading storybooks. Reading storybooks. Yeah, this is storybooks. Now the next one is watching television. Watching television is 20 students watch television. So again we'll make one more bar and leave one gap, and then 20 we have to make. और अब बना लेते हैं 20 तो. So here it is 20. Just see the scale, और scale को देख के हमें 20 बना लेना है. So this is 20, and this one is watching television. So we'll write watching television. Now the next one is listening to music. Only 10 students like to listen to music, तो 10 बनाना है. So let's make 10. So this is 10. This 5, ये 10 हो गया, और ये हो गया हमारा listening to music. इसका short form लिख देते हैं अपन, listening to music. And the last one is painting. 15 children like to paint. So 5, 10, 15. 15 here is here, and leave one gap again and draw one 15. We have to draw up to 15. So ये 15 का हो गया, and here also this 15. So this is painting. So we have to write here painting. So now this
इस एक्सिस और ये एक्सिस में क्या है, हियर इट इज प्रिफर्ड एक्टिविटी, सो राइट हियर प्रिफर्ड एक्टिविटी, PREFERRED, प्रिफर्ड एक्टिविटी। एंड दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने वाई एक्सिस पे लिख दिया। अब यूनिट लेंथ क्या ली हमने, दैट आल्सो वी हैव टू राइट। सो 1 यूनिट लेंथ कितनी है, 5 स्टूडेंट्स है, सो विल राइट हियर स्केल, स्केल, और स्केल हमने किस पे ली है, वाई एक्सिस पे ली है। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट लेंथ is 5 students. So in this way, this question number 1 is completed. So I hope you understood how to draw bar graph. So thank you so much for watching the video.